Krishna explains very nicely that how if a person who is very much attached to fruitive activities, intelligent person should not disrupt his mind by asking him not to perform the duty. So that is explained here. So we'll discuss that. I'll share the screen. We are going to discuss today. There already we have discussed that Krishna has explained Krishna conscious person, a self-realized ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा in this material world. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. It will be finished one day. Welcome to all the devotees for this exclusive question and answer session. We had some technical issues because of which we are delayed. We are delayed about 18 minutes. Okay, so as we have understood that Prabhupada in purport very nicely explains, and also Krishna has explained in the verses that a Krishna conscious person, he is satisfied, he is happy, he is rejoicing in the self. So he doesn't require anything to perform the activities. He is not in the need of anything. A person who is in the need, who wants something, he performs the activity in this material world to get that thing, to run his livelihood. But a Krishna conscious person is perfectly situated. And more so, he understands this world is full of material tribulation, temporary in nature, dukhalayam ashashvatam. So here, why should I waste my energy and time to perform the activity and get the result, which will be finished one day? But still, such person, Krishna conscious person who is realized, he does activities. Why he does activities? Krishna explained that in order to teach the common men in the society, to set an example, to give the direction in the society, a Krishna conscious person becomes exemplary and becomes role model, like Janak Maharaj, like Krishna is himself saying that I perform the activity so that people may follow me. And if suppose I don't follow the activity, I don't engage in the activity, then people will not engage in the activity and they will start imitating me. And then I will be the cause of ruination in the society. So therefore, Krishna also performed the activity. So in continuation, what Krishna is saying today, we'll see that Ussi deyud ime loka na kuryam karma chedaham sankarasya cha kartasyam upahanyam ima praja. If I should cease to work, then all those worlds would be put to ruination. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings. Just see. So why Krishna performs the activity? Here Krishna is saying, even though Krishna is, aloof from all the material activity, as yesterday we discussed that in Shweta Sutra Upanishad, there is one beautiful verse. It says that न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्य सम चाधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च. स्वाभाविकी मीन्स स्वतः अपने आप से, ज्ञान बल क्रिया ये सब भगवान की जो परास शक्ति, जो शक्तियां हैं, वो सारी चीज मैनिफेस्ट कर देती हैं. न तस्य कार्यम करणम च विद्यते. भगवान श्री कृष्ण को
इस भौतिक जगत में करने के लिए कुछ नहीं है। He doesn't have to personally involve into performing any activity. न तस्य कार्यम करणम च विद, उनको कोई कारण नहीं है कि वो एक्टिविटी करें। न तस्य सम चाधिकस्य दृश्यते, और उनके बराबर कोई नहीं या उनसे कोई बड़ा नहीं है। न तस्य सम, कोई बराबर, सम मीन्स इक्वल, न चाधिकस्य दृश्यते, और कोई उनसे बड़ा भी नहीं है। और उनकी क्या क्वालिटीज है? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मल्टीफेरियस एनर्जीज आर वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और वो स्वतः काम कर रही हैं भगवान के डिक्टेट पे। सो अब भगवान कृष्ण का पोजीशन ये है, तो भगवान कृष्ण को करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बाइबल ऑल्सो देयर इज स्टेटमेंट, they say that when God said let there be creation, and there was creation. In Bhagavatam also it is said Krishna is Satya Sankalpa. When Krishna just wishes, his desires becomes reality. Satya Sankalpa, जो भी वो माइंड में सोचते हैं वो सत्य हो जाता है। बट स्टिल कृष्णा परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। क्यों करते हैं यहाँ पर बताया गया है। कृष्णा ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, कृष्णा अपनी माँ बाप की सेवा की, यशोदा माँ, नंद बाबा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ गाय चराने जाते थे, गोपियों के साथ उन्होंने लीलाएं की, 16,108 रानियों से शादी किया। सो ये सब भगवान ने एक्टिविटीज की सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। इफ आई, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अगर मैं एक्टिविटी नहीं करूं तो whole world will be put to ruination and I will be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of the sentient being. So इसलिए भगवान एक्टिविटी कर रहे हैं, और भगवान की एक्टिविटी को देखकर हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि I should also perform the activity as Krishna has asked us to do. Now यहाँ पर एक चीज आता है कि कृष्णा को, जैसे कृष्णा एक्टिविटी की, कृष्णा मैरिड 16,108 वाइफ्स, सो शुड वी आल्सो फॉलो कृष्णा? वी शुड आल्सो मैरी many गर्ल्स? सो द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज there are two terminology used here. One is called imitation, another is called following. तो यहाँ प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं एक बहुत अच्छी चीज। कुछ लोग होते हैं जो लॉर्ड शिवा को अपना भगवान मानते हैं। आई वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड ही इज माई आइडियल गॉड। बट व्हाट हैपेंस इन द नेम ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, दे स्टार्ट imitating Lord Shiva. Imitation मतलब without having qualification, you start copying the activity of that particular person who is superior to you. जब किसी superior व्यक्ति के एक्टिविटी को आप बिना क्वालिफिकेशन के फॉलो कॉपी करने लगते हैं, without qualification, when you start copying the activity of a superior, then that activity is called imitation. समझ में आया? आप क्वालिफाइड नहीं हैं, you don't deserve, but you desire to have those qualities. So and now you start copying the activity. अच्छा वो ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, उन्होंने ये बोला तो मैं भी वो बोलूंगा, उन्होंने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, उन्होंने वैसे किया तो मैं भी। सो कॉपी करना एक्टिविटी को, तो इसको बोलते हैं इमिटेशन, विदाउट नोइंग द इंटेंट ऑफ द कंटेंट. When we start doing something, that becomes imitation. So in the scriptures, imitation is strictly prohibited. Imitation we should never do. Like Lord Shiva's devotee, they imitate Lord Shiva and indulge into smoking gaja, saying that Lord Shiva also smoked gaja. Lord Shiva consumes bhang, so we should also drink bhang. So in the name of Lord Shiva, Lord Shiva's devotee, शिवा के जो भक्त हैं, सो कॉल्ड भक्त हैं, एक्चुअली में शिवा के भक्त नहीं है, बट अपने आप को शिवा के भक्त बोलते हैं। केदारनाथ जाएंगे और काशी विश्वनाथ जाएंगे, सब जगह जाएंगे,
क्या करेंगे, रास्ते भर जाते हुए स्मोकिंग करते हुए जाएंगे, इलिसिट एक्टिविटी में इंडल्ज होते हुए जाएंगे, गलत गलत गाने सुनते हुए जाएंगे, और वहां लॉर्ड शिवा से भी कुछ गलत चीज ही मांग के आएंगे, मटेरियल चीज इंडल्ज करने के लिए चीज मांग के आएंगे, और अपने आप को शिवा का भक्त बताएंगे. बट दिस इज नॉट द डिवोशन ऑफ टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा. रियल डिवोशन मीन्स यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा, नॉट द लाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिजो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर कि अच्छा, तो अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे शिवा भक्त, मेरे शिवा भगवान है, तो लॉर्ड शिवा ने गांजा पिया तो मैं भी गांजा पीऊंगा, तो लॉर्ड शिवा ने तो पॉइजन भी पिया, आप पॉइजन पियोगे? नहीं ना. लॉर्ड शिवा ड्रैंक द ओशियन ऑफ पॉइजन, so will you also drink the poison? One drop poison you eat, you drink, you will die, you cannot sustain. So if you want to imitate, so imitate completely perfectly, no. So कृष्णा को भी लोग imitate करना चाहते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं. See, Lord Shiva drank poison to the extent of swelling on ocean, but if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking gaja and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. So we imitate nahi karna hame. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate Lord in his Ras Leela. Now this is about Lord Shiva. कृष्णा को भी लोग इमिटेट करते हैं. कैसे? कृष्णा ने रास लीला किया, बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस किया, तो हम भी बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस करेंगे, हम रास लीला मनाएंगे. इसको बोलते हैं इमिटेशन, और ऐसे लोग जाएंगे नरक में. प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, they will all go to hell. There are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate Lord in his Ras Leela और डांस ऑफ लव, फॉरगेटिंग देयर इनएबिलिटी टू लिफ्ट गोवर्धन हिल. तो अब रास लीला तो कर दिए, लॉर्ड कृष्णा ने गोवर्धन हिल भी उठाया, तो आप जाके गोवर्धन हिल उठाओगे? नहीं ना. You don't have the capability, you don't have the power, strength. So if you are copying, then copy everything. Otherwise, जो आपको अच्छा लगा वो कॉपी कर लिया आपने, जो जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है नहीं कर सकते वो नहीं. ऐसे नहीं होता. इमिटेट करना तो परफेक्टली करो, इमिटेट एवरीथिंग. And you cannot do, because Krishna is supreme Lord. Krishna killed so many demons, now so many demons are roaming around us, so go and kill them. That you will not. No, I will not do. But Ras Leela, that I will do, because I get enjoyment in that. So this imitation we should not do. Therefore the one try to imitate the powerful, but simply follow their instruction, it is best. So best क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉलो करना. कृष्णा के लाइफ को नहीं फॉलो करना, कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना. सदगुरु नालायक बोलता है कि कृष्णा के लाइफ को फॉलो करो. डोंट रीड भगवद गीता, फॉलो हिज लाइफ. यू रास्कल, you don't deserve to, first of all, you don't have the quality to follow even the instruction of Krishna. How can you imitate Krishna? And if you are to imitate also, first, in the beginning itself, Krishna killed Putana. You also, there are so many Putanas roaming around us, go and kill them. Krishna lifted Govardhan hill. You also, now in Assam there is a flood coming. It's like that in Govardhan, there was in Vrindavan time, Indra sent devastating rain, and it was completely devastating. Whole Vrindavan was drowned. But Krishna lifted Govardhan and protected all the inhabitants of Rasdam. Now in Assam, there is a great tragedy, disaster is happening. So now if you want to say that I'll follow Krishna, not the instruction, but his life. So go and protect them by lifting Barak Valley in the Assam. So that you cannot do. What nonsense then your philosophy is. So this is all bogus understanding. Correct understanding नहीं है इन लोगों के पास. नाम है सदगुरु, बट सारी असत असत चीजें बताता है ये लड़का आदमी, और नाम रख लिया सदगुरु. अपनी सिस्टर, अपनी बेटी को, जवान बेटी को गोद में उठाएगा और लोगों को दिखाएगा, देखो आई एम लिबरल, आई एम ऑल embracing. What nonsense this is. This spirituality? Spirituality says that you should not have you should not indulge, you should not even sit with your sister, mother or daughter in solitary place, should not touch them, and he is embracing. What nonsense this. And we'll say, oh, we are modern, rascaldom. So such people we should not follow. We should, this is called imitation. Following is instruction, जो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं.
simply follow their instruction. Not should one try to occupy their post without qualification. है ना, क्वालिफिकेशन के बिना हम किसी चीज को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेशन. सो एंड कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, वी कैन नेवर एवर इमिटेट हिम, सो वी शुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट कृष्णा इज सेइंग सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकित्सुर्लोक संग्रहम. As the ignorant perform their duties with attachment to results, similarly the learned may also act but without attachment. So जैसे एक मूर्ख व्यक्ति होता है, एक मूढ़ा होता है, एक गधा होता है, वो कोई भी एक्टिविटी को करता है तो उसे बड़ा अटैच रहता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखता है, फिर एक्टिविटी करता है. उसी तरीके से एक जो इंटेलिजेंट पर्सन, जो इनलाइटेंड पर्सन है, जो लर्नेड आदमी है, जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति है, वो एक्टिविटी वो भी करेगा लेकिन अटैचमेंट नहीं रखेगा. यही अंतर है, यही अंतर है एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति में और एक मूर्ख व्यक्ति में. यही अंतर है कि मूर्ख व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक है वो बहुत ज्यादा अटैच रहेगा चीजों में, और थोड़ा इधर ऊपर नीचे होगा डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, ही इज नॉट अटैच्ड, और कुछ भी हो गया ही विल नॉट बी डिस्टर्ब. सो दैट इज द डिफरेंस. सो हमें ये बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, लर्नेड मैन बनना है, ये मूढ़ा नहीं बनना, मूर्ख गधा जैसा वर्क नहीं करना, अटैचमेंट में नहीं रहना. अटैचमेंट में जिंदगी जिएंगे तो फिर जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगे, कभी आप खुश नहीं रहेंगे. अगर खुशी चाहिए तो अटैचमेंट को छोड़ के ड्यूटी जस्ट करो फॉर द सेक ऑफ लीडिंग पीपल ऑन द राइट पाथ, इसके लिए वर्क करना बस. ओके, नेक्स्ट कृष्णा इज सेइंग न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगनम संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वाम युक्त समाचरण. Let not the wise disrupt the minds of ignorant who are attached to fruitive action. They should not be encouraged to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion. So यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि जो learned man है, जो कृष्णा, learned means कृष्णा conscious man. Materialistic person can never be learned. They are ignorant. Ignorantly they are calling themselves as learned, but actually they are ignorant. Just like एक पागल खाने में आप जाओ तो बहुत सारे पागल घूमते रहते हैं. आगरा में अगर आप जाओगे तो आगरा में पागल खाना है, वहां पागल खाने में बहुत सारे पागल हैं. कोई है ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके घूम रहा है, व्हाइट ड्रेस पहन के अपने आप को डॉक्टर बताता है, कोई अपने आप को पीएम बताता है, कोई अपने आप को मजिस्ट्रेट बताता है. सो all are madmen, and all the madmen they are posing themselves as different identity, personality. They have taken some personality, and among the madmen he is calling himself as PM, CM, DM, doctor. So and others are also believing he is very intelligent, he has some intelligence of fixing the thing and treating the people like that. So only मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति ही एक पागल को डॉक्टर समझेगा या इंजीनियर समझेगा या कुछ भी समझेगा. जो पागल नहीं है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा पागल आदमी को डॉक्टर. जो पागल हैं वही पागल आदमी को डॉक्टर समझेंगे. तो आज यही हो रहा है पागलों के समाज में. एक पागल बहुत बड़ा आदमी बन गया तो बाकी सारे पागल बोलते हैं वाह वेरी नाइस इंटेलिजेंट. सो अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज ओनली लर्नेड मैन, ऑल अदर्स आर मैडमैन. Why madmen? Because they don't understand that they're not this body, they are spirit soul. They think that I'm this body, I'm this body. So for the body they are doing everything, and one day this body will finish, all the positions, accumulation, accomplishment will be finished, will go to hell. So this basic understanding they don't have, so therefore they are madman. So learned man is who understand that I'm not this body, I'm spirit soul, I belong to Krishna, so I should serve Krishna. He is learned man. सो अ लर्नेड मैन क्या करेगा, जो ये मूर्ख व्यक्ति है ना इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनको इनकी एक्टिविटी में इंडल्ज होने दो, जो भी अटैचमेंट है, इग्नोरेंस है उसमें रहने दो. बट लर्नेड मैन क्या करेगा, अपने एक्टिविटी से उनको टीच करेगा. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स. सो बाय हिज एक्शन ही विल टीच देम, ही विल गाइड देम. बिकॉज मूर्ख व्यक्ति है जो वो एक्टिविटी करेगा डिस्टर्ब हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. अभी मैंने ग्रुप में शेयर किया एक न्यूज, आपने देखा होगा. एक लेडी है, she was MD of ICICI Bank and was earning 1.5 crore every month, but she became now mentally disordered. She has become madman. So all her accomplishment, everything financial जो उसने accumulate किया था सब finish हो गया. What is the use of all this accumulation? Now she has become mad. Psychiatrist पास जा रही है.
So there is no use in material accomplishment, advancement, क्योंकि एक क्षण में सब कुछ यूजलेस हो जाएगा. आपके सामने सारी चीज है बट आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज आप पागल हो गए हैं, मेंटल इलनेस हो गया आपको. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है क्या है यहाँ पर दुनिया में, क्यों अटैच होना है, किससे अटैच होना है, किसके लिए करना है. नथिंग इज योर्स, सो व्हाई टू बी अटैच्ड. सो अच्छे से ड्यूटी करेगा विदाउट अटैचमेंट और भगवान की अच्छे से भक्ति करेगा, टाइम निकालेगा, चैंटिंग करेगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, बुक रीडिंग करेगा, भगवद गीता पढ़ेगा एंड हायर सेंस डेवलप करेगा, प्रैक्टिकल सेंस डेवलप करेगा, जिंदगी में कैसे रहना है. when there is tough time in your life, then you be realistic and be optimistic for future. When there is bad time, then how a Krishna conscious person deals with that. Now जब आपको भगवद गीता अंडरस्टैंडिंग है तभी ये आपके पास डिस्पोजिशन हो सकता है, आउटलुक तभी होगा. अदरवाइज अगर आप मटेरियली अटैच्ड हो तो आपके पास ये सेंस आएगा ही नहीं. जब आपके इस लाइफ में बैड थिंग चल रहे हैं तो एट प्रेजेंट यू शुड बी रियलिस्टिक, कैसे इसको हैंडल करना, एंड फॉर फ्यूचर यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. एंड जब गुड टाइम चल रहा है, व्हेन यू हैव everything, all the luxury and all those things, so that time you are humble enough, and when there is bad time then you tolerate. So these are some qualities which we can develop, and that can only happen when we read Bhagavad Gita, we chant Hare Krishna and all those things. Okay, so here Prabhupada writes one very important thing. Because the conditioned soul do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. Through sense regulation, however, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. So यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे एक्टिविटी करनी है, लोगों को सिखाना है, लोगों को टीच करना है, लोगों को गाइड करना है. अब समय आ गया हम लोगों को कि लोगों को गाइड करें, टीच करें, इंस्ट्रक्ट करें और सिखाएं कि कैसे एक्टिविटी करते हैं, देखो ऐसे करते हैं. अदरवाइज हमारा भी हाल वही लेडी जैसा होगा जो कि पागल हो गई है, प्रैक्टिकली शी इज मैड मैन. सो यही होगा अगर हम लोग अटैचमेंट में रह के एक्टिविटी करेंगे. तो अटैचमेंट कुछ बुलेट पॉइंट्स जो कंक्लूड करूंगा मैं उससे. एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है एक्टिविटी नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्णा, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए तो द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इनर्शिया. नो, दैट इज नॉट सो. कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स मोस्ट एक्टिव पर्सन. सो यू शुड परफॉर्म द एक्टिविटी, बट कैसे एक्टिविटी करना, विदाउट अटैचमेंट, और रिजल्ट कृष्णा को ऑफर करना है एंड लोगों को गाइड करना. यू शुड सेट द एग्जाम्पल फॉर द ignorant men who are materialistic, those who are drowned into ignorance and not knowing what is the purpose of life, what is the goal of life, what should be our disposition towards the performing the activity. So we should train them, we should guide them, and we should make them to understand by our action. Action speaks louder than the words. So with this we'll stop. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Dandavat. Hare Krishna, Naresh. Hare Krishna, Manish. Hare Krishna, everyone.